Over here, on behalf of BCA Department of Commerce, I warmly welcome one and all as we are gathered here for one-day national webinar on IoT boost in automation industry, jointly organized. Am I audible? Yes, you are audible. Go on. Jointly organized by Department of Computer Application and World Renewal Spiritual Trust, Rajasthan. The topic of today's webinar is most important concerning the needs of automation industry. I would like to welcome all dignitaries for this one-day national webinar. President of Program, Dr. Sriram Solanki Sir, Principal of Dayanand College of Commerce, Latur. Resource person, Mr. Yogendra Hingane Sir, Indian Solar Power Plant, Rajasthan. Mr. Amol Dhanwant Sir, Indian Solar Power Plant, Rajasthan, in presence of Dr. Rajaram Pawar Sir, Vice Principal of Dayanand College of Commerce, Latur. Dr. Balaji Kamre Sir, IQAC Coordinator. Dr. Sainath Umate Sir, Coordinator of Azadi Ka Amrut Mahotsav. Professor Shashikant Swami Sir, HOD of BCA Department. You are either the one that creates an automation or you are getting automated. We begin any program with a welcome speech. So I would like to invite Dr. Balaji Kamre Sir, IQAC Coordinator, to present a welcome speech. Thank you, Pratiksha. A very warm welcome and good morning to all of you. All the dignitaries present for today's one-day national seminar on IoT boost in automation industry. For today's program, our respected Principal Sir, Dr. Sriram Solanki Sir, today's resource person, Mr. Yogendra Hingane Sir, Mr. Amol Dhanwant Sir, our Vice Principal, respected Dr. Rajaram Pawar Sir, my friend, Coordinator of Azadi Ka Amrut Mahotsav, Dr. Sainath Umate Sir, and the person because of whom this seminar we have arranged, Shashikant Swami Sir, Head of BCA Department, and all the organizing team. I welcome you all. First of all, I would like to highlight some points relating to our college, to our resource person. Actually, sir, we are having 3,500 students in our college. In the Marathwada region, our college is a single faculty college, but we are providing multiple variation in BCom graduation level. At BCom graduation level, we are having the strong BCA and BBA department also. At BCom also, we are providing the computer application in BCom. Right? So these kind of programs we are running in our college. Recently, only 2 of our students have been selected in TCS. Okay. Our placement cell is also performing well for recruiting various our students of our colleges. Last year also, we are having at least 100 of our students were selected in different organizations in Maharashtra level and at national level as well. Before going further, I would like to say that the first rule of any technology used in business or in life is that automation. And this IoT boost in automation industry is not new to all of us, but there are some innovative technologies have now emerged, and nowadays we are using it also. And I hope that the World Renewal Spiritual Trust and the Indian World Solar Thermal Power Plant, and collaboratively we are organizing this type of seminar. It will help all of us to understand what is IoT and how it is emerging and enhancing and improving the automation industry. Okay. We hope that the advances in the automation and artificial intelligence and robotics will increase the productivity, and India in near future is going to lead the world economy with the help of this automation industry. Okay. So thank you and welcome you all. Wish luck best to today's seminar, today's program. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I would like to invite Professor Shashikant Swami Sir, HOD of BCA Department, to present introductory speech. Good morning, all.
Today we have gathered here for one-day national webinar on IoT boost in automation industry, which is jointly organized by Department of Computer Application and World Renewal Spiritual Trust, Rajasthan. I, Swami Shashikant, HOD of the Computer Department, welcome you, including the President of our webinar, Honorable Principal Dr. Solunke sir, for inspiring us, Honorable Vice Principal Pawar sir, our IQSC Coordinator Kamble sir, and the Regional Coordinator of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Dr. Umate sir, and all the faculty members and all enthusiastic students. I give some information regarding our department. Our department was established in the year of 2000. We run 6 divisions and the number of students studying in the departments are 470. We are conducting the different activities organized for the students through the department, such as technical events, webinars, seminar, pre-campus training, etc. We have a rich infrastructure. There are 7 computer labs having 207 computers available for the students. We have 15 smart boards for online teaching. Our college hired the Microsoft Team app for making the teaching learning process effectively during this COVID-19 pandemic. Many of the students of our departments are working in multinational companies as well as abroad. The placement cell of our college provide the job opportunities for the students. We have signed the MOU for the different companies like IBM, Fuel, Bajaj Finance, NIIT, etc. Our students secure the first, second, third rank in the university exam merit list also. Today we have organized a one-day national webinar on IoT boost in automation industry. As we all know, the whole world is locked in the COVID-19 and we were connected only through the internet. The internet was and is the only source of a connectivity and in a future too. It is lead to us to bring a future. For keeping in mind the importance of internet, we have organized this webinar. We know the IoT is very important and useful topic, and the being of the student of a computer studies, they have must be aware for the job opportunities in this field. We are pleased to say that more than 722 participants have participated in this webinar from 8 different states. And lastly, on behalf of our Dayanand College of Commerce and our BCA departments, once again, I welcome you all participants. Thank you. Thank you, sir, for your highlight. Now, I would like to invite Professor Sheetal Cherekar ma'am to introduce a resource person, Mr. Yogendra Hingane sir, Indian Solar Power Plant, Rajasthan. Thank you, Pratiksha. Myself, Sheetal Cherekar, Assistant Professor of Computer Application Department, Dayanand College of Commerce, Latur. Respected Principal, Dr. Solanke sir, Vice Principal, Dr. Pawar sir, IQSC Coordinator, Dr. Kamble sir, Department Head, Swami sir, all faculty members, and my dear students. Today is the one-day national webinar on IoT boost in automation industry, jointly organized by Department of Computer Application and World Renewal Spiritual Trust, Rajasthan. It gives me immense pleasure to introduce and welcome today's resource person, Honorable Yogendra Hingane sir from India, Solar Thermal Power Plant, Rajasthan. He has completed PE in Civil Engineering from Pune University and PG Diploma in Construction and Management, ICC certification
and many more diplomas and certifications. He has command on different languages like English, Marathi, Hindi, Kannada, Russian. He is the registered member of Institute of Civil Engineer India. His projects are present all over the world like Abu Dhabi, UAE and Italy. He works on different projects and plays a role of manager, developer, designer, administrator, project controller. He has work experience as coordinator at solar power plant last in 10 to 11 years. He also worked as planning engineers, Technimont ICB last in 3 to 4 years. He worked in Indian Oil Corporation on Corporation Limited, New Delhi, polypropylene plant refinery project at Panipat, coal-based thermal power plant 365 MV at South America. He is an inspiration for all of us. There are many more things to tell about him, but I will not take much more time. So I request to Yogendra sir to guide us with all your valuable insights. Thank you, sir. Thank you, madam. Am I audible? Yes, Bhaiji. Okay. Yogendra sir. Thank you. Yes. Respected Principal Sir, Dr. S.S. Solanke Sir, respected Vice Principal, Dr. R.S. Pawar Sir, Yes, sir. respected IQAC Coordinator, Dr. Balaji Kamble Sir, Coordinator of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Dr. Saina Thumate Sir, HOD of BCA Department, Swami Sir, the organizing committee, and thank you, Cherekar Madam, for my introduction. I am humbled and I'm very much thankful. And thank you for Dayanand College of Commerce for giving me this opportunity to introduce my organization and the solar power plant to the students. I'm very much glad and happy to address this session where almost 800 participants are participating in this online session. So I'm thankful to everyone who has contributed in this arrangement and participation. Firstly, I would like to tell that I myself is an alumni of Dayanand Science College. So I have completed my 11th and 12th from Dayanand Science in 1999 and 2000. So after that, I went to civil engineering in Government College of Engineering, Pune, and then further studies. And then I worked in different multinational companies in different multinational different countries for different projects. And I am here since 2010 with World Renewal Spiritual Trust. So World Renewal Spiritual Trust is a sister organization of Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, as you all know, is a spiritual institute. And this spiritual institute is can you see my screen? Oh. Okay. So World Renewal Spiritual Trust is a sister organization of Brahma Kumaris. मुझे लगता है आप सबने ब्रह्मा कुमारीज का नाम तो सुना ही होगा. ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है और इस संस्था के लगभग 8,500 सेंटर भारत में है और लगभग 137 देशों में इसके सेंटर्स है. तो देश विदेश में ये संस्था का कार्य चलता है. इसका मेन कार्य है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार और इसके साथ ही जैसे
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपकी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसी ये संस्था भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बट इसका एजुकेशन स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। जैसे आप भी स्टूडेंट्स है, हम भी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है। जैसे आपको सब्जेक्ट्स है, हमको 4 सब्जेक्ट्स है। तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स है। इसमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 हमारे सब्जेक्ट्स है। तो ज्ञान में हम आध्यात्मिक ज्ञान का सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसको अपने आचरण में लाते हैं। योग माना मेडिटेशन, हम मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन से मन को शक्ति कैसे मिले, शांति कैसे मिले, आपस में प्रेम भाईचारा कैसे हो, वो सिखाया जाता है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में कैसे धारण करें, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी कैसे बने, इसके लिए हम वैल्यू एजुकेशन भी देते हैं। और अपने पर्सनालिटी को कैसे संवारना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, तो ये सारा धारणा के सब्जेक्ट में कवर होता है। और लास्ट है सेवा। सेवा में हम अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करके सेवा करते हैं। सेवा में जो गीता में कहा गया है कर्म योग, उसके आधार पे हम सेवा करते हैं। माना कर्म ही योग बने, हमारे कर्म ही हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो और इस कर्म का आधार निस्वार्थ भाव हो। यही निस्वार्थ भाव और ज्ञान को लेके, आध्यात्मिक ज्ञान को लेके हम अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिसिप्लिन में सेवा करते हैं। तो उसमें से ही एक डिपार्टमेंट है सोलार डिपार्टमेंट, जो कि संस्था का सोलार एक्टिविटीज को आगे लेके जाता है। तो हम पिछले 20 साल से सोलार में रिसर्च कर रहे हैं। आपको पता होगा सोलार एक बहुत आजकल उभरता हुआ एक फील्ड है, टेक्निकल एक फील्ड ऐसी बनी है जिसमें हम सनलाइट को, सनलाइट के पोटेंशियल को, सनलाइट के एनर्जी को हम यूज करके उससे पावर जनरेट करते हैं, उससे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम चला सकते हैं। तो पिछले 20 साल से संस्था में ये कार्य हो रहा है। तो ये संस्था आज जबकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, हम 2020-22 में बैठे हैं, बट ये संस्था पिछले 30 साल से इस बात को पहले से ही समझ के, इस विजन को समझ के सोलार में एक्टिविटीज का आरंभ किया सिंस 1990। तो तब से हम इसमें सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि रिसर्च भी कर रहे हैं। तो इसमें मेन जो हमारा रिसर्च है, ये एक हमने आपको जो दिख रहा है ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो इसका नाम हमने दिया है इंडिया वन। इंडिया वन नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये वाला जो रिसर्च प्रोजेक्ट है अपने आप में एक अनोखा है। ये पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट आपको यहीं देखने मिलेगा। ये प्रोजेक्ट है आबू रोड, राजस्थान में। आप आके देखना चाहे तो ये और भी अच्छा, उत्तम है। बट क्योंकि हम कोरोना कोविड के लॉकडाउन में, रिस्ट्रिक्शन में है, इसलिए हम इसको वर्चुअली आज देखेंगे। तो मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटर शेंडगे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप इसका एक वीडियो हमने शेयर किया था आपके साथ, अब प्लीज आप उसको आप शेयर कर सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को देख के आपको इस प्रोजेक्ट की कल्पना समझ में आएगी। इस प्रोजेक्ट से आपको एक व्यू मिलेगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या और कैसे है। अभी आप ये वीडियो देखेंगे।
तो जैसे कि आपने देखा है वीडियो में, ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है। दिस इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट। इसका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलमेंट, कमीशनिंग, सारा कुछ संस्था के अंदर ही हुआ है। सारा कुछ संस्था के जो भाई बहन है, जो समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कमीशन किया है। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत कम रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सक्सेस होते हैं, और उसमें से इंडिया वन सोलर पावर प्लांट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है। इसमें दो कंट्रीज की स्पॉन्सरशिप है, इंडियन गवर्नमेंट एंड जर्मन गवर्नमेंट। इन दोनों ने मिलकर ऑलमोस्ट 70% ग्रांट इसको दिया है। तो इस 70% ग्रांट से प्रोजेक्ट ने और संस्था ने ये रिसर्च करके दिखाया है, एंड दिस इज अ सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट. This project is running since last 5 years now on a successful basis. So, can you see my slide? Can you see my screen? आप देख सकते हैं? Anyone can give feedback if you can see my screen. फीडबैक दे सकता है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं भाई जी। सामने जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वो दिख रहा है? नहीं? No sir, no sir, no. Okay, let me again share it. अभी दिख रहा है? Yes. Yes sir. Okay. So let's understand this project. So ये प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी को हार्नेस करता है। तो यहाँ आप एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम देख रहे हैं आपके सामने। लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ब्लैक कलर में, वो रिफ्लेक्टर्स है। दोज आर द सोलर रिफ्लेक्टर्स। इसको हम रिफ्लेक्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने मिरर्स को यूज किया है। जो सोलर ग्रेड मिरर्स है, वो मिरर्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये मिरर्स को हमने ऐसे अरेंज किया है एक पैराबोलिक शेप में। ज्योमेट्री में पैराबोला एक ऐसा शेप है जिससे आपको सनलाइट जो है जब उसके ऊपर आती है तो उसका एक फोकल पॉइंट मिलता है। जो आपको येलो कलर में दिख रहा है कि वो सारे रेज कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, तो एक फोकल पॉइंट पे ये सारे रेज कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टर है, ये 600 स्क्वायर फीट एरिया का है, एक रिफ्लेक्टर। तो ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें 2 बेडरूम हॉल किचन बैठ सकते हैं, इतना बड़ा एक रिफ्लेक्टर है। ऐसे 770 रिफ्लेक्टर्स है। इन सारे रिफ्लेक्टर्स का डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, कमीशनिंग सारा संस्था के अंदर ही हुआ है। तो ये रिफ्लेक्टर्स काम ऐसे करते हैं कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सोलर रिफ्लेक्टर विथ फिक्स्ड फोकस, क्योंकि इनका फोकस जो है वो फिक्स है। फिक्स्ड फोकस माना वो फोकस हिलता नहीं, भले रिफ्लेक्टर्स सनलाइट के साथ घूमते हो। हम सबको पता है सन का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट सारे दिन में चेंज होता रहता है, बिकॉज सन इज वी आर ट्रैकिंग द सन, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। So we have from morning east we have sunrise, and evening west we have sunset. So every time the position is changing. So accordingly, these reflectors also change their position. So we call that as tracking. है ना? इसमें रिफ्लेक्टर में 3 प्रकार के मूवमेंट है। तो 3 प्रकार के मूवमेंट आपको इसको ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं। ये सामने से आप देख रहे हैं, ये सामने से रिफ्लेक्टर ऐसे दिखता है। So this reflector keeps on tracking the sun. So इसलिए इसमें 3 प्रकार के ट्रैकिंग मूवमेंट्स है। फर्स्ट इज द डेली ट्रैकिंग, जिसको हम बोलते हैं। डेली ट्रैकिंग माना ईस्ट से वेस्ट ये सन को ट्रैक करता है ऑटोमेटिकली। माना मॉर्निंग में आपका इसका पोजीशन ईस्ट में होगा और इवनिंग में इसका पोजीशन वेस्ट की तरफ रहेगा। सो ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होता है। सेकेंड इज वी कॉल इट सीजनल ट्रैकिंग। सीजनल ट्रैकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीजन वाइज इसका मूवमेंट चेंज होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सन पाथ जो है
विंटर में दक्षिणायन होता है और समर में उत्तरायण की तरफ जाता है। तो अभी संक्रांति के बाद सन जो है वो उत्तर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो इसको भी हम इस रिफ्लेक्टर में सन को जो मूवमेंट चेंज होता है उसको भी हम इसमें एकम्पनी करते हैं, उसको सीजनल ट्रैकिंग बोलते हैं। सो दैट हैपन्स इन नॉर्थ साउथ एक्सिस, सो वी कॉल इट सीजनल ट्रैकिंग। सो एक है डेली ट्रैकिंग जो ईस्ट वेस्ट एक्सिस में होता है, सेकेंड इज सीजनल ट्रैकिंग जो नॉर्थ साउथ एक्सिस में होता है, और इसमें तीसरी विशेषता है शेप चेंज ट्रैकिंग। शेप चेंज ट्रैकिंग माना इसका शेप जो है पैराबोला वो चेंज होता रहता है। ये फ्लेक्सिबल पैराबोला है, माना इसका पैराबोला का शेप जो है वो रोज अलग अलग शेप ले लेता है। सो ये सारी खूबियां ये रिफ्लेक्टर के अंदर है। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, पीछे का ये सारा स्ट्रक्चरल पार्ट आपको दिखेगा। तो ये सारा फैब्रिकेशन में बनाया हुआ रिफ्लेक्टर है। इसमें सारा MS स्टील यूज किया है और स्टैट डिजाइन यूज किया है, ऑटोकैड यूज किया है। तो इससे सारे मूवमेंट्स हम इसको दे सकते हैं। वन इज द डेली मूवमेंट, सेकेंड इज द सीजनल मूवमेंट एंड थर्ड इज द शेप चेंज मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाली इसमें मैकेनिकल एक्चुएटर्स है। एक्चुएटर्स माना गियर्स होते हैं, और उस गियर्स को चलाने के लिए मोटर्स होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, DC मोटर्स। और उन गियर्स और मोटर्स को चलाने के लिए एक माइक्रो चिप है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। उसके अंदर आपको कैमरा है, सेंसर्स लगे हुए हैं, प्रोग्रामिंग लगी हुई है, ICs लगे हुए हैं, जिसके थ्रू ये चिप जो है ये 5 एक्चुएटर्स और 5 मोटर्स को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, उसको एक पोजीशन लाके देती है, सो दैट द फोकस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका फोकस फिक्स होता है। तो ये सारी विशेषताएं इस रिफ्लेक्टर में है। तो इस सब को डेवलप किया है यही संस्था के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें सारे ही इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर हर एक रिफ्लेक्टर, मैंने जैसे बताया कि 770 रिफ्लेक्टर्स है। ये 770 रिफ्लेक्टर्स को हर एक को एक IP एड्रेस है, और ये सारे वायरलेस नेटवर्क एनेबल्ड है। इन सबको वायरलेस से कनेक्ट किया है, हर एक के लिए एक IP एड्रेस दिया है। तो ऐसे 770 IP एड्रेसेस है। So we have 770 reflectors, 770 IP address. Each reflector has 5 gears. Each reflector has 5 motors, and each reflector has 1 electronic chip. तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे पास 3500 गियर्स है, 3500 मोटर्स है, 770 इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है, और उस एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में लगभग 250 से 300 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, छोटे बड़े। उसमें ICs है, ड्राइवर्स है, उन सब का डिटेल्स आपको अमोल भाई बताएंगे। तो ये सब चीजें इसमें लगी हुई है। ऐसी कोई भी इंजीनियरिंग फैकल्टी नहीं है जो इसमें काम नहीं हो। इसमें फिजिक्स है, इसमें ऑप्टिक्स है, इसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन है, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT है, नेटवर्किंग है, एंड प्लस ये जब सनलाइट इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है तो ये सामने जाके एक पॉइंट पे जब कॉन्सेंट्रेट होती है, आप सोचिए 600 स्क्वायर फीट का रिफ्लेक्टर एक 500 mm डायमीटर में कॉन्सेंट्रेट होता है। 500 mm माना हार्डली आधा मीटर, हाफ मीटर डायमीटर में ये सनलाइट, सारा का सारा सनलाइट कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उस पॉइंट पे 1200 से 1400 डिग्री टेम्परेचर बनता है। तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आप इसको लोहा भी पिघला सकते हैं सनलाइट से, इतना ज्यादा ये टेम्परेचर है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग रिफ्लेक्टर्स हमने लगाए हैं, और हर एक रिफ्लेक्टर का सामने एक ऐसे टेम्परेचर बनता है। ऐसे ये आप इसमें देख सकते हैं, सामने जो चमक रहा है ऑलमोस्ट लाइक सन। So this is the concentrating point, focal point of that reflector.
तो इसमें आप देखेंगे 1200 से 1400 डिग्री टेम्परेचर यहाँ बनता है। आप सोचेंगे नॉर्मल सनलाइट जो हमारे ऊपर आ रही है, उसी सनलाइट को जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसका टेम्परेचर 1200 से 1400 डिग्री बनता है। तो इतना सनलाइट, इतना सोलर एनर्जी का पोटेंशियल हमारे पास है, और इसको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। जब हम इनको कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम इसको यूजेबल फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि जो भी हमको हीट चाहिए, जो भी हमारे एप्लीकेशंस है, चाहे वो गर्म पानी हो जैसे नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, चाहे फिर वो स्टीम बनाना हो, जैसे स्टीम से हम खाना भी बना सकते हैं, इसी टेक्नोलॉजी से हम खाना बनाते हैं। हम स्टीम से लॉन्ड्री करते हैं, स्टीम से हॉस्पिटल का स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टीम से हम दूध गर्म करते हैं, चाय कॉफ़ी बनाते हैं, और इसी स्टीम से हम फिर पावर जनरेट भी करते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जो है, कोयले का पाउडर बनाते हैं और उसको फिर डीजल के साथ फायर करते हैं, एक फायर बनाते हैं, बॉयलर, बहुत बड़ा फायर। उस फायर की हीट से पानी को गर्म किया जाता है, फिर उस पानी को स्टीम बनाया जाता है, और उस स्टीम को फिर टरबाइन में ले जाते हैं, और उस टरबाइन से फिर हमारा जो है बिजली बनता है। तो इस स्कीम में हमने थर्मल पावर प्लांट टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया है, बट हम यहाँ कोयला नहीं जलाते हैं, हम कोई लकड़ी नहीं जलाते हैं, हम कोई डीजल नहीं जलाते हैं। यहाँ पे हम प्योर ओनली एंड ओनली सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके हम स्टीम जनरेट करते हैं। तो वापस हम इस स्कीम पे आते हैं और इसको समझते हैं। तो लेफ्ट साइड में ये रिफ्लेक्टर्स है जो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आप बीच में जो ये येलो कलर है, ये सनलाइट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और ये सामने जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, कोनिकल शेप में, ये रिसीवर्स है। तो ये सारा हीट इस रिसीवर में जाता है। 1200 लग, जैसे मैंने कहा कि 1200 से 1400 डिग्री टेम्परेचर इस रिसीवर में जाता है, और इस रिसीवर में हमने कास्ट आयन मेटल यूज किया है। इस कास्ट आयन को गर्म करता है, और ये सारा का सारा रिसीवर जब गर्म होता है, इसके अंदर हमने बॉयलर जैसी एक कॉइल दी है। तो ये सारा हीट जो है ट्रांसफर होता है कॉइल को, और इस कॉइल्स में जब हम पानी इंजेक्ट करते हैं तो ये पानी हीट और टेम्परेचर की वजह से स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो सेम प्रोसेस जो थर्मल पावर प्लांट में फायर जला के, कोयला जला के, डीजल जला के जो हम फायर बना के जो पानी को स्टीम बनाते हैं, इस केस में हम कोई कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल कुछ नहीं जलाते हैं। हम प्योर सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके उस कॉन्सेंट्रेटेड हीट से हम पानी का स्टीम बनाते हैं। फिर उस स्टीम को हम टरबाइन में लेके जाते हैं, या टरबाइन में उस स्टीम की ताकत से पावर जनरेट होता है। फिर वही स्टीम जो है कंडेंसर में आके स्टीम का वाटर में कन्वर्जन होता है, और फिर वही वाटर जो है रिसाइकल होता है। इसलिए ये क्लोज लूप सर्किट है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में होता है, वैसे ये इसमें भी एक क्लोज लूप सर्किट है। आगे का सारा सर्किट जो है वो थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा ही नया टेक्नोलॉजी, रिसर्च टेक्नोलॉजी हमने बनाया है, जो कि लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल जो हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, उसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए ये सारा हमने टेक्निकल डिटेल्स है कि 770 रिफ्लेक्टर्स हमने लगाए। तो 770 रिफ्लेक्टर्स के हर एक के सामने एक रिसीवर होता है, तो 770 रिसीवर्स हमने इसमें लगाए, और फिर उन रिसीवर से हमने पावर स्टीम जनरेट करके हमने पावर जनरेट किया। तो ये है इंडिया वन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का थर्मल पावर जनरेशन थ्रू सोलर। सो इसलिए ये पूरा ही क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके हम इसको यूज कर रहे हैं। बट जैसे कि हर एक नई टेक्नोलॉजी में होता ये है कि हम इसको शुरुआत छोटे लेवल से करते हैं, फिर बड़े बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, और इसमें फिर we try to bring automation into all this, because as the technology matures you need to bring automation so that it becomes independent, it becomes more efficient. So that's why we have made this technology in such a way, automation,
that we have a mass fabrication, mass manufacturing. We have our own workshop. लगभग 250 वर्कर्स ने मिलके इस टेक्नोलॉजी को बनाया. जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग जिग्स फिक्चर्स हमने यूज करके इसका मास फैब्रिकेशन साइट पे किया. फिर इसके लिए जो मिरर्स लगते हैं, स्पेशल सोलर ग्रेड मिरर्स होते हैं, उसका कर्विंग करना होता है क्योंकि पैराबोला शेप देने के लिए एक कर्व मिरर बनाना पड़ता है. तो ये कर्विंग भी हमने यहीं पे किया और इस कर्विंग के लिए एक स्पेशल ग्लू हमने यूज किया जो कि इंपोर्टेड ग्लू था. उस ग्लू से हमने इस रिफ्लेक्टर को एक शेप दिया. यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सोलर लेआउट है जो 770 रिफ्लेक्टर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन. और फिर इसके बाद जो हमने इसको ऑन साइट इरेक्शन किया उसका प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं. और ये रिसीवर का डिजाइन है, इसके डिटेल्स है कि हमने रिसीवर कैसे डिजाइन किया, इसमें कैसे हम सारा सोलर एनर्जी कलेक्ट करते हैं, इससे फिर कैसे हम हीट ट्रांसफर लेते हैं और कैसे हम इससे स्टीम जनरेट करते हैं. ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम लगभग 400 डिग्री के ऊपर स्टीम जनरेट करते हैं. और ये टेक्नोलॉजी की विशेष बात और एक ये है कि ये टेक्नोलॉजी स्टोरेज देती है. जैसे कि आप जानते हैं आजकल बैटरीज का सारा डिस्कशन हो रहा है. थर्मल इलेक्ट्रिक स्टोरेज में, एनर्जी स्टोरेज में हम बैटरीज को डिस्कस करते हैं. बैटरीज में भी हम आजकल लिथियम आयन बैटरीज की डिस्कशन करते हैं. बट इस केस में यहाँ पे पावर स्टोरेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम हीट को स्टोर कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में. तो हीट स्टोरेज के लिए हमने कास्ट आयन को यूज किया है. तो ये हीट स्टोरेज ऐसे काम करता है, दिन में ये चार्जिंग होता है और रात को ये डिस्चार्जिंग मोड में रहता है. जैसे अपना मोबाइल है, हम 2 घंटा चार्ज करते हैं और फिर बाकी का 20-22 घंटा हम इसको यूज करते हैं बिकॉज वी हैव बैटरी इन द मोबाइल. सो दैट बैटरी गिव्स द एनर्जी फॉर रेस्ट 20-22 आवर्स, है ना. तो ऐसे ही हमारे इस केस में कास्ट आयन मेटल है जो कि हीट को स्टोर करता है और वो रात भर वो हीट देता रहता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए. Therefore, we have this technology which is 24 hours running. वर्ल्ड का ये पहला प्लांट है जो 24 घंटा विदाउट सनलाइट काम करता है. क्योंकि दूसरे प्लांट ऐसे है, दूसरे टेक्नोलॉजीज ऐसे है कि दिन में जब तक सनलाइट है, जब तक सोलर है तब तक ही काम करेगा. बट ये टेक्नोलॉजी ऐसा है सनसेट के बाद भी इसके अंदर जो हीट स्टोर रहता है उस स्टोरेज से रात भर ये स्टीम जनरेट करता है. So that's why we have first plant in the world which can run for 24 hours on continuous basis without using any batteries. Here we have thermal storage. We call it thermal storage. ये सारे उसके पैरामीटर्स है, कितना एनर्जी आता है, कितना डिस्चार्ज होता है, ये सब चीजें हैं. ये सब उसके ग्राफ्स है. इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर्स सारे सीरीज में हमने कनेक्ट किए हैं तो टेम्परेचर्स कैसे बढ़ते जाते हैं. सो हमको इसमें सुपर हीटेड स्टीम मिलता है जो कि 400 डिग्री का स्टीम हमको प्योर सनलाइट से हम लेते हैं. यह हमारा टरबाइन है जिसमें हम स्टीम इंजेक्ट करते हैं और पावर जनरेट करते हैं. अमोल सरचं ते लॅपटॉप व्यवस्थित घे म्हणून तो इसमें हमने कंटिन्यूसली 42 आवर्स प्लांट को रन किया है जो कि अपने आप में बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है. वर्ल्ड लेवल पे ये पहली बारी ऐसे हुआ है कि कोई सोलर प्लांट विदाउट नॉन सनी आवर्स माना शाम और रात के टाइम में भी चला है और कंटिन्यू 42 आवर्स ये प्लांट चला है नॉन स्टॉप. ये उसके ग्राफ से ये स्टीम पैरामीटर्स आप देख सकते हैं. कंटिन्यू 350 डिग्री के ऊपर हमको स्टीम मिला है फॉर 42 आवर्स. ये उसके प्रेशर है, स्टीम का प्रेशर आप देख सकते हैं. कंटिन्यू 41 बार प्रेशर पे ये हमने टरबाइन चलाया है. ये पावर का आप देख सकते हैं कि कैसे हम पावर को, क्योंकि हमारा खुद का कैंपस है यहाँ पे, ब्रह्मा कुमारी इसका ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है. इसमें 25,000 लोगों की रहने की खाने की व्यवस्था है. तो हम सबको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं. तो ये पावर सप्लाई हम इसी प्लांट से करते हैं. इसी प्लांट से हम दिन रात पावर सप्लाई करके अपने कैंपस की जो रिक्वायरमेंट है, ये टोटली ऑफ ग्रिड प्लांट है. इसको हमने ग्रिड में नहीं दिया है क्योंकि ये रिसर्च प्लांट है.
बट बाकी ये प्लांट जो है अपने कैंपस के लिए पावर सप्लाई करता है। ये सारे पैरामीटर्स है टरबाइन के, और ये फाइनल लेआउट है जिसमें आप देख सकते हैं 770 रिफ्लेक्टर्स रिसीवर्स आपको इसमें देखेंगे। तो ये आबू रोड में है। आबू रोड ये माउंट आबू का फुट हिल्स है। जब माउंट आबू के लिए आप आएंगे तो आबू रोड में आपको ये प्लांट इंडिया 1 सोलर थर्मल पावर प्लांट के नाम से आपको इसको देख सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा ही रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो साथ ही साथ हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, फ्रूट ट्रीज लगाए हैं, एनवायरनमेंट के लिए एक इकोलॉजिकल जोन बनाया है, जिसको आप आके ही देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये हम क्यों चाह रहे हैं कि हम एक ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी क्यों चाहिए, उसके लिए हम क्यों काम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ आके समझ में आएगा। तो ये पैरेलली हम अवेयरनेस भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके सेमिनार्स भी देते हैं, 1 डे वर्कशॉप भी देते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो किसी को भी इसमें और ज़्यादा रुचि हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आपका सुझाव हो, या कुछ आपको सेवा देनी हो, तो आप इस वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके you can follow our activities. I hope this was I tried my best to have an interactive session, and I hope all the participants got some or little or maybe all of the discussion that we had. So I tried my best, because online it's not very easy to bring all things together and give it in a crux. I tried my best. Hope it was helpful. Once again, I thank you all the committee and the president, principal sir, vice principal sir. Thank you for giving me this opportunity. Om Shanti. Thank you, sir. Thank you, sir, for your precious word and time. Thank you for the guidance about solar thermal power point and the excellent work. And thank you for the visual presentation. It is well said that automatic configuration are useful when we are incapable of customizing it. Now, I would like to invite Professor Amol Admane sir to introduce second resource person of today's webinar, Mr. Amol Dhanwant, Indian Solar Power Plant, Rajasthan. Thank you, Pratiksha. It's my pleasure to welcome and introduce Honorable Mr. Amol Dhanwant sir, who is software professional and having hardcore experience of 15 plus years in developing system-based, embedded, and middleware applications using embedded C, C++ for Linux, Windows, and embedded platforms, and also 3+ years of experience in Android application development in Java. Sir has completed Master in Computer Science, University of Pune. Amol sir has got a lot of experience in software development. He has worked as an embedded software developer in Logical Embedded System in Pune 2003 to 2005. Embedded software engineer in Crystalline Infotech in Pune 2005 to 2006. Also, senior software engineer firmware in Expo Electro Optical in C, C++ window embedded technology in Pune between 2007 and 2010. Also, technical leader in Scrum Master in HCL Technologies C, C++ Linux in Chennai between 2011 to 2017. Amol sir also work as entrepreneur and freelancer in C, C++, Java, and technology in Pune between 2017 to 2021. Amol sir currently working in Tech in software design and development team. Also, he is a consulting person in
Indian One Sonar Thermal Power Plant. I request Mr. Amol Dhanwant sir to please guide us with your valuable thoughts. Hello everyone. Thanks for everyone to invite me for presenting this seminar on IoT. It's my privilege. I thank everyone for this opportunity given to me. So let's have a brief overview of what IoT is. And you must be aware that there are a lot of happening technologies in this current world now. IoT, as we know, and you must have heard from somewhere, from newspapers or some friends or through college lectures or now from some seminars like IoT, the term IoT. So let's understand, or let's get a brief idea about what is IoT. So starting with a very small example, which which will give you a very good idea of what is IoT. For example, consider there is a farmer, there is an agriculture industry, there is a farmer, and his requirement is like he wants to water the crops or his fields daily, morning, evening. There are 2 times he wants to water the crops, and he, for this particular condition, for this particular requirement, what is the thing is like he has to visit the fields every time and switch on the motor. If he has that sprinklers and everything, so that automatic it will start sprinkling, then he has to wait there. So this is the time cycle, like how much time it will take to water the entire plants, how much time it will take for the motor to pull out the water from the wells and everything. So everything he has to calculate, and then the water will be the plants will be watered. Okay, so suppose this all activity is done remotely on a click of mobile button, on and off. Can you imagine this? So he can be anywhere. He can be in his house. He can be in the city. If he is traveling also, at the particular time, he can do it by just clicking a button from a mobile. So the infrastructure which is required to function in this way, like communicating from a remote uh, UI to monitor a physical location or to get data from a physical location, can be termed as IoT. So Internet of Things means the things or the physical objects which can be controlled or can be diagnosed, or we can get the data of those things over internet by using this infrastructure of IoT, can be termed as Internet of Things. So this was a very what we say brief example. Another example, if I give you, which is also very interesting. Consider there is a milk industry, and there are thousands of cows. And this is a real example. The place which I stay, Pune, nearby there is a very big milk industry and milk products named by Chitade. So they have thousands of cows. So what they have done is they have installed sensors on cows' bodies, all cows' bodies, buffaloes, cows. So that sensor will transmit data to a central station about the health of the cow. What is the temperature of the cow? How much food she has taken? What is her location? And going further, they also have a sensor which tells which cow is pregnant, which cow has a baby in her stomach. So identifying the cows which are not well, which are not eating properly, is very easy through these sensors. So immediately actions can be taken. So imagine
that a person or a team of people going there and trying to identify by taking the temperature of each cow or monitoring the cow, how much time it will take, and it will be so difficult and time consuming. But due to IoT, due to this infrastructure, any person who is responsible for monitoring this can get this information at his mobile application, his desktop application, or wherever he wishes to see the information. So this is the power of IoT, which makes things very simple, which makes things very easy to understand, to monitor, to control. So these are typically two examples which I gave. From these examples, you will clearly understand what is the power of IoT. Similarly, you people also must be having your own businesses. You must be having your own industries. There also you can think of implementing these IoT solutions and minimize the effort which you are taking for the activities. People are using IoT to monitor the vehicles. Suppose some goods are transferred from one destination to another destination. So every good is tagged with an Bluetooth tag, and uh, so it has a number. So when it is unloaded, automatic counting is happening. So imagine there are thousands of parts, different parts, and whenever it is passed through a machine, automatically the counter is increased. So you can imagine how technology is trying to minimize the human efforts. Counting thousands of parts, sitting and counting will take so much of time, and there are manual errors and there are miscalculations and human errors also. So using this electronic technology and its IoT infrastructure, we can easily track the losses. We can easily track the areas where the problems are there. So this is a very brief two examples of IoT. We can discuss some real-time examples which we are actually have implemented in our Rajasthan Brahma Kumari's solar plant. So let's see what are the components of IoT. So now there this IoT can be distributed or can be bifurcated in four major components. The first is physical objects. Second is the sensors. Third is the communication systems, and the fourth is the data processing. So what are physical objects? I gave you two examples, like there are cattle, there are farm industry. So whatever object can be monitored and whatever object can be controlled, that can be termed as a physical object. So physically, machines, if you want to control a machine remotely, say there is a thermos or a thermostation where if the temperature rises to 1000 degrees, then I have to control remotely, saying that it should go down to 100 and again rise to 500. So anything which can be controlled and which can be whose information we can retrieve can be physical objects. It can be anything. So the second is as the slide shows, the sensors. The second is the sensors or the devices. So the sensors are responsible for physically collecting the data from these objects or the physical objects. For example, you may see an example if you want to monitor the what we say the level of water. For example, in a farming industry, if the tank is getting full and there is a sensor which monitors the level of tank. When the tank gets low, automatically the pump starts, and when the tank is full, automatically the pump stops. So this is a very simple example of a level sensor. There are thousands and thousands of sensors. For example, in a home automation system, there are motion sensors, there are fire detection, there are smoke detection, there are intrusion detection.
So there are n number of sensors which are responsible for monitoring the physical objects, machines, or human beings, or even animals. And once they are monitoring, they have the capability to get the data and store the data. Okay, so they have this capability. So if you see, these are the number of sensors you can see on the screen. There are n number of sensors. These are some examples. You can see the thermistor, the IR sensor, infrared sensor, then the ultrasonic sensor, the accelerometer sensor, which measures the traversal of any object, then the rain sensor, soil moisture sensor. You can imagine this soil moisture sensor in farming industry. If there's a moisture is huge, then we can uh, reduce the water which is given to the plants. So extra water is saved, and even if we give adequate water to the plants, their growth will be also good. So see, there are thousands of sensors, and probably some of you might be from this electronic industry also, and they might be knowing more types of sensor than what is shown here. So recently I saw a video. um, there is a technology developed in US which has a tablet inside which a camera is fit, which is so small, and it is given to the patient, and when he drinks that with the water, it flows through his stomach and arteries, through his stomach and everywhere, and it clicks the picture and transmits outside. So it is basically to diagnose the uh, ulcers in the ulcers or cancers in the stomach. So you can imagine how far the technology is going to diagnose, in terms of diagnosis also, and in terms of monitoring also. So these are typical examples of sensors. Now let's see the third part, the connectivity. So now how the collected data comes to the user. You are a user. You want to monitor the data of your machine, or your farm, or your cattle, or your house. You want to see what is happening in your house. You can just turn on the camera, and live pictures or live streaming from your house or a factory, what is happening, you can clearly monitor. So how this can happen? Definitely we need some communication medium. So what is the communication mediums? There are Wi-Fi, Bluetooth, WAN, LAN, satellite. These are all the communication mediums. These are all the communication mediums which are part of this IoT infrastructure, which are responsible for collecting the data from sensor. Through this medium of communication, they transmit this data over this communication medium to a central location, to a central server where the data is stored. The central server is responsible to understand should also implement the same protocol uh, by which these sensors or these medium devices send the data to the central location, and the central location understands the protocol, takes the data, and logs the information in our own customized software. This central data, you can see, when the data is logged there, these are very high speed and high end servers which collect the data and process the data. So you are getting thousands and thousands information about the cows continuously, but can again you go and manually check what is the status of each cow? No. So what will happen? This processing unit, what it will do, according to our customized software or coding, what it will do, it will process um, the data and give results of what you have configured. For example, you only want to see which cows are having health issues, which cows are having baby in their stomach, which cows are not eating properly, which cows are moved away from that location.
by some reason. So you can configure this, and this data processing will collect the data, and periodically it will apply filters, it will apply logics, and it will present the data or store the data in a format which will be filtered. So this is the role of, so we saw physical objects, we saw sensors, we saw communication medium, and now we are seeing data processing on the server side, where the communication, through communication medium, we have got the data, and now the data is being processed. Now the data is being analyzed, and it is more in terms of presentable or the customized form of what the user may require. So this was the fourth component, and finally comes the user interface. So now user interface, you can imagine user interface is where actually the data which is being processed on the server is shown. For example, I log into my application and start seeing the status of my farm, how much time the machine, how much time the water is being poured to the farms, to the plants, how much, what are the cattles or what are the cows which are having problems, which machine is not functioning. Out of 5 machines, this machine is not functioning properly, this machine is dead, this machine has not given expected output. So all this information can be visible for me on my mobile application, on my desktop application, on web. I can see this information anywhere. So this user interface also, now there is a communication or the connectivity between this user interface application and the server. In between this, there can be any protocol. There are a number of protocols like TCP, UDP, or there are what we say XML protocols and everything. These protocols are used for what we say the typical user and the server communication. Client and server protocols are used for client and server interactions. So this user application requests data to the server side. So giving an example, the server side will have implementation of APIs, REST APIs, which the client will require. Client will require the information which will be presented on the UI. Then client can query the information, and client can also command the information. So client can have a button which he presses, and in what we say, he commands that please please stop the pump. So the button is clicked and the request goes from this user interface to the server, from server to the devices, and finally to the hardware, and that particular action is performed. So this is the complete flow of the applications, IoT infrastructure, and this is the complete circle of IoT applications. So everything will fall under, any IoT application will have to go through all these phases, then only it is a IoT application. If you have application which is itself managing something and doesn't transmit on internet, that can be termed as only in embedded application. So I have a application which just monitors the water level and it automatically ons itself, it automatically off itself. There is nothing, no information being broadcasted on, or it can't, it is not sending anything remotely. So that is an embedded application. There are applications which only collect the data, that is a logger application. There are applications which have client and server communication, that is an obvious client server application. But when an embedded application, the sensors, the physical devices are completely linked with this infrastructure, and resultant is that we see the information on the remote client application, this is called as IoT. This is called as a complete IoT application. Okay, so I hope you have understood this IoT concept briefly, what I explained. So you can see some of the interfaces. So this interface, you can see
See, there are so much of control systems here and monitoring systems, like the ceiling, like the thermostat. It is giving a graphical, such a beautiful interface. It is giving a graphical representation of what is the temperature of my thermostat, what is the uh, ceiling, what is the proportion of sound there. It is giving the cooking temperature, it is giving the humidity, it is giving where the lights are on or off. So imagine that what we can control and what we can achieve through IoT, through this infrastructure. So here also you can see the diagnostic information. So this is one of the slide which is from our solar plant, Mount Abu, Rajasthan, which is a unique plant of which is having 770 solar panel dishes, which is responsible for collecting the sun radiations and generating the electricity. So imagine monitoring these 770 solar plants. It has so much of sensors, right from the motors, right from its rotation angles, right from its inclination, right from the temperature of the water, then its humidity and everything, and what amount of energy it is generated day wise, month wise, and weekly. So all these parameters are completely monitored by our IoT application. So these sensors, we have our infrastructure, these sensors collect the data, they broadcast over a Wi-Fi medium to our central server. From that central server, this information is pulled and data processing is completely applied on it. And after applying the data processing, the information is presentable in a presentable form, which can be directly seen on the desktop application, mobile application. One of the samples you are seeing on the screen now, the turbine runtime, the total units, the plants, how much kilowatt of energy it has generated between this time. So this is the real-time application which actually our team of India Solar Plant are working on, and we are very like fortunate to get a chance to work on such a huge plant with such a advanced technology and able to understand how exactly the functioning of the sensors and everything happen. So this is another, as I told you, how much of energy generated as on today, this week, this month, and lifetime. So it's very easy for the upper management or upper layer people to present them in such a simple form. So just they can see it and they can understand what kind of progress or what kind of functionality is happening using this IoT technology. So coming to the benefits, what I can say, I just gave an extremely good example of a chip or a tablet, sorry, being run through patient's intestine. So it runs into the intestine, it doesn't harm the patient, and it clicks the photographs and transmits to the other outside sensors, and from that it's kind of live streaming, and the patient and the doctor can easily identify what type of cancer is being developed in the stomach or what kind of ulcers are there, what are the problems in the stomach. So how simple and how accurate, definitely it depends upon the accuracy of the sensors and communication medium, the speed of communication. Some real-time applications are it's very important for certain real-time applications to have extremely powerful communication, extremely high-speed communication, and very well designed hardware and sensors. Otherwise, there might be accidents also. If there is a delay in stopping a furnace, or there is a delay or some power failure, so that also has to be taken care.
which is a challenging part, and which is now what we say, people are working on that to make it more secure and more fast, we can say. So another benefit is like you can have this data collected of IoT, and if we apply the latest technology principles like the artificial intelligence and machine learning, it gives you an edge, upper edge of knowing what is the state of your business. For example, you are wasting the water in while putting to the crops. Then, if you cut down through this information, your application or your server side processing will give a graph or give a result which will tell that this much of amount, this much amount of water was used, and actually this much amount of water is required. So you can go and reconfigure your pumps or your outlets so that you will stop the wastage. Imagine water being saved every time it is delivered, how much. And this is about water, but if it is applied to high quality material or high valued material, how much saving can be done using this IoT. So these are general examples, and this is the happening technology of 21st century. I hope you people, after listening this, may get interested to know more about this, and you definitely please watch videos on it. Please learn many things about it, and also, if possible, join courses on it. There is a great amount of what we say, careers available in this technology. So I hope that you will find some good opportunities in this infrastructure of IoT. And thanks for giving me this opportunity to discuss about the importance of IoT and its applications. Thanks again, and best of luck for everyone in their future. Thank you. Bye. To learn how to code. Every day does, and thank you, sir, for your precious time. Now, I would like to invite the president of today's webinar and the principal of Dayanand Commerce College, Latur, Dr. Sriram Soranke, sir, to express his view on today's topic and to guide us with his valuable thoughts. Dr. Sriram Soranke, sir. व्यस्त है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें The number you have dialed is currently busy. Please try later. Hello. Yes, sir, you audible. Namaskar. I welcome all of you in the one-day webinar on IT boost in automation industry. Especially our webinar's resource person, Mr. Yogendra Hingane,
I.S.T.P.P. Rajasthan. Mr. Amol, second resource person, Mr. Amol Dhanwant, I.S.T.P.P. Rajasthan. Vice Principal of our college, Dr. Rajaram Pawar. IQAC Coordinator, Dr. Balaji Kamble. Coordinator, Azadi Ka Amrut Mahotsav, Dr. Sainath Umate. Head, Department of Computer Application, Professor Shashikant Swami, and all organizing committee, especially Lahu Sendge, Professor Prasad Patil, Amol Admane, Sudhir Mane, Cherekar Madam, and anchor Miss Pratiksha Sagar. First of all, I congratulate all the eminent resource persons who expressed effectively his views on IoT boost and IoT boost in automation industry. I am also congratulate to all participants who are connected with the webinar from all over the country. Also, I am congratulate to our computer application department head, Professor Swami and his team, who organized effectively such a webinar with collaboration with the I.S.T.P.P. Rajasthan. I am also welcome and congratulate to all the participants and students. Friends, we are suffering from the COVID-19 pandemic from last 2 years, and all activities are stopped at the beginning of pandemic. But we accept such challenge of the pandemic, and we all facing such challenge with the use of internet, with the use of information technology, with the help of computer science. So the today's webinar, IoT boosting automation industry, we know all where we found automation, and in this automation IoT plays very important role. IoT is beneficial in increase operational efficiency. IoT application helps in controlling or handling the traffic. IoT helps in public safety. It helps in effective business management. IoT helps in better customer services. IoT is useful in better use of resources and assets. So IoT boost is very important in today's life and in today's automation. So our team, our computer application department arrange such type of webinar to share the ideas, knowledge and advances about the IT field and internet field.
So I congratulate our team who organized such a webinar effectively. Also, lastly, I am congratulated to all resource persons, both resource persons, Mr. Yogendra Hingane sir, Mr. Amol Dhanwant, and our students. I hope that such webinar will be very useful, helpful to our students, our teachers, businessmen, and other stakeholders. Lastly, I am again congratulate all the participants and hopes that such webinar would be fruitful and is useful in future study and future activities of the students, teachers, and all stakeholders or businessmen. So I again thankful to all and thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable words and sharing with us a words of wisdom. Now, I would like to invite Professor Sudhir Manesar to express vote of thanks. Thank you, Pratiksha. It is an honor for me to get the opportunity to express vote of thanks. I would like to thank the resource person, Mr. Yogendra Hingane, and the Mr. Amol Dhanwant to take out time from their busy schedule to grace the event and sharing valuable information about IoT and its importance with us. I extend my gratitude to our principal, president of this program, Dr. Shriram Solonke sir, for inspiring and encourage us with your words. I thank special attendant from our college, Dr. Rajaram Pawar sir, Vice Principal, Dr. Balaji Kamble, IQC Coordinator, Dr. Sainath Umate sir, Coordinator Azadika Amrut Mahotsav. A special thank to Mr. Shashikant Swami sir, Head of the Department of Computer Application Department, for organizing wonderful event. Thanks to all members of organizing committee for hard working in arranging this webinar and making it a success. Finally, I would like to thank all participants from different states for joining with us and listening our resource person. Thank you everyone once again. With permission of a president here, I declare that this webinar is over. Thank you very much. Thank you. One notice, all of us, the feedback link can be sent on the WhatsApp and Telegram. So please fill the feedback link. I request to all participants. Thank you very much. Thank you.